What did you believe for way too long as a child? What did you believe way too long as a child? Okay, so like what did I believe? Santa Claus? Did I believe in Santa Claus? Well, I am from India. Okay, and इंडिया में क्रिसमस इट्स नॉट रियली लाइक अ बेसिकली इंडिया में दिवाली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है. क्रिसमस इज़ नॉट रियली दैट मच सेलिब्रेट इन इंडिया. ओके, ऐसा नहीं कि लाइक इट्स अ पब्लिक हॉलीडे. या some people are celebrate Christmas too, but usually not really that much. Okay, and the Santa Claus are kind of like a relate to the Christmas, kind of like relate with that thing. And basically as a child I know that ki Santa Claus was exist, but I didn't really know like what is that is the value of that and what is that is this thing. So I don't really believe is in Santa Claus as a child. No, like जब मैं छोटा था तो मुझे पता ही नहीं था कि what is that is Santa Claus and things like that. Okay, और जब मैं बड़ा and when I kind of like knows about who is exactly the Santa Claus, then yeah, as a kind of like a something really a fiction character, I don't know. Okay, but I don't really believe that much as a Santa Claus. Tooth Fairy, yeah. Still, Tooth Fairy is also kind of like a something really a friction character to me. As a child, I didn't really know who is exactly a Tooth Fairy. Okay, let me tell you one thing. What is a Tooth Fairy? So, Tooth Fairy, according to the kind of like a US या यूरोप में शायद टूथ फेरी का ज़्यादा लाइक मे बी दे नो अबाउट दैट. इंडिया में उतना नहीं है. टूथ फेरी यानी बेसिकली दिस थिंग कि बचपन में आपके दांत यानी लाइक वाइल यंग जब बचपन में आपके दांत टूट जाते हैं, सो आप अपने दांत को ड्यूरिंग द नाइट अपने पिलो के नीचे यानी अपने पिलो के नीचे रख देते हो. देन टूथ फेरी विल काइंड ऑफ लाइक steal that tooth, and it's kind of like a something really um, like when that tooth fairies took that tooth, then it gives you some sort of like a um, good vibe. What is good ashirwad? Yeah, might be. Like I'm not really sure about what is really the tooth fairy, and still I'm not really know about that much. Okay, like basically I watch a movie about Guardians. Okay, it's an animated movie, and in that movie they represent Santa Claus and Tooth Fairy and those and things. Before that, I didn't really know about the Tooth Fairies exist or not. So probably I'm not really sure about anything. No. Monster. Uh, monster. Well, like basically are those are things ना are actually meant for the US people. Okay, जो US में रहते हैं उन लोगों के लिए शायद those are the things are really matter. Like those are things like a Santa Claus, Tooth Fairy. Those are people are actually thinking about that. क्योंकि बचपन में उनको कहानियाँ में सुनाया जाता है कि ऐसा होता है वैसा होता है. इंडिया में नो. लाइक बेसिकली दिस थिंग कि आई नेवर रियली हर्ड दैट कि बेड से लाइक नीचे से कोई मॉन्स्टर भी निकलता है या कैबिनेट से कोई मॉन्स्टर भी निकलता है. नो. नथिंग रियली एट ऑल. सो आई डिडंट रियली बिलीव इन हैविंग अ मॉन्स्टर एंड नो. हाँ, मुझे भूतों से डर लगता है, बट पिक्चर के भूतों से ही डर लगता है. आई नेवर रियली स्केयर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक अ क्लाउन. और शायद मैंने देखा भी नहीं क्लाउन इन रियल लाइफ. So probably is this thing ki nah, I haven't really faced, I haven't really know about monster. No. Superstitious means क्या होता है? Superstitious, children may believe in the various superstitions such as avoiding crack, sidewalk, pavan, bad luck, making wish to below birthday candles. These are belief. Okay, सुपरस्टिशियस मतलब क्या होता है ना कि लाइक पीपल आर स्ट्रॉन्ग बिलीव इन दैट थिंग. लाइक अगर आप बर्थडे पे विश करते हो तो वो विश पूरी हो जाती है एंड दिस एंड दैट ऐसा कभी होता है. लाइक स्टिल आई डिडंट रियली बिलीव इन दैट सुपरस्टिशन. लाइक बचपन में तो नहीं एंड अभी भी तो बिल्कुल भी नहीं. या नो. ओके. Magic and fantasy. Yeah, magic and fantasy. Have you ever believed that magic and fantasy during the child?
I seen like I know there is a magician who do some sort of magic. I still remember that when I was a child, there is a magician came to a school and he was showing us magic show. Okay, was really incredible. Like I always wanted, I wanted to know that ki how does he do that? How he do that kind of like a some sort of magic? But then the teacher says that like I asked teacher that ki why this guy is actually doing kind of like a very magic stuff. So teacher says that कि it's a kind of like a हाथ की सफाई यानी कि वो अपने हाथों से जादू नहीं करता है, he just kind of like a just showing things that we it's a kind of like a हाथ सफाई. I don't know how should I supposed to express this हाथ सफाई, but yeah. And then I understand कि हाँ चलो ये एक हाथ सफाई है, it's a kind of like a some sort of चालाकी and things like that. So that's it, fine, okay. तो उसके बाद I didn't really have that much curiosity about the like basically watching the magic and things like that. And as also magic is a kind of like a things ना जो अगर आपको पता चल जाए तो उसका influence या उसका जो impact है ना वो कम हो जाता है. Okay, like the power of magic is has to be kind of like a, when you don't know that thing. So it is really good, yeah. Like but I haven't really kind of like a fantasize about the magic and things like that. No, nothing really at all. Like I don't know, yeah. Like basically, is this thing? I am actually from India, okay, and my childhood was not really that much thinking about that fantasy stuff and this and that and that. No, like शायद मैं उतना सोचता नहीं था वगैरह वगैरह कि I don't know. Like basically, when I was a child, there is a one thing that I'm kind of like a thinking about a lot is that ki Shaktiman. Okay, like I still remember that ki my father recently bought the television and in the Doordarshan they actually in every Sunday at 10 a.m. or maybe 11 a.m. I don't know exact time, but they actually broadcast Shaktiman. Oh, Shaktiman is a kind of like a superhero. Okay, so he was kind of like he has a power, he has this and he has that and that and that was really incredible. Was is like it was something really that he like I wanted to become like a Shaktiman. I just it's just like the power that he have and the way that he used that power was like really amazing, really great, and I really love it. Okay, so this is the only character that I'm kind of like a fantasize about in the childhood, and then after that, no. No. Then after that, like there are also a bunch of the character too, like Aryaman. Okay, Aryaman is also kind of like a Shaktiman. Okay, but it's another superhero. Then Junior G. Okay, Junior G is also kind of like a some sort of superhero who fight for kind of like a monster and things like that. Like when I was a child, yeah, and as also then some of the television show I was really excited and I really wanted to watch is that ki Lauren and Hardy. Yeah, Lauren and Hardy was really incredible. The way that things that they laugh us was, yeah. So usually do I have to think about that fantasy and stuff like that? Like I didn't really think about that much fantasy and stuff like that. Okay, because most of the time I was actually spending with friend and most of the time I was spending with the families and things like that. Kyuki like let me tell you one thing na ki why this recommended answer, like why they actually include this Santa Claus tooth fairy and this like. सो यूएस में क्या होता है ना कि यूएस में जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जैसे ही बच्चा हो जाता है, ओके, सो एज अ पेरेंट्स दे गेव चाइल्ड टू हिज ओन रूम. ओके, उसको एक सेपरेट रूम मिल जाती है एंड देन सो बेसिकली व्हाट इज दैट इज दिस थिंग कि the US, the child from US who actually facing a lot of things while in the childhood, क्योंकि वो लाइक बचपन से अकेला पड़ जाता है. ओके, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. हमारे इंडिया में लाइक बेसिकली like I didn't really have, still I don't really have kind of like a my own room. like basically शादी से पहले किसी बच्चे को खुद की रूम मिलना, I don't know, like मुझे तो अब तक नहीं मिली. no, like me and my sister are sharing a one room. So like
नो हमारे लाइक आई डोंट नो जस्ट लाइक दैट कि बेसिकली इज दिस थिंग कि यूएस में ये है कि यूएस में कि जब भी चाइल्ड होता है उसके सेपरेट रूम मिल जाती है, सो बेसिकली उस अकेले कमरे में वो बच्चा अकेला सोता है। ओके, अकेला सोता है एंड दैट चाइल्ड एज वाज ऑलमोस्ट लाइक मे बी 3 और 4 ईयर। ओके, तो अगर वो बच्चा अकेला सोता है तो ही वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ स्टफ। उसको पता भी नहीं कि वो सोच रहा है कि क्या कर रहा है, आई डोंट नो, बट ही वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट कि किसी ने बोला है कि सांता क्लॉज आते हैं जो बच्चा जो रात को एक तरह से आपको क्रिसमस छोड़ के चले जाते हैं, सो यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, अभी उसके लिए नहीं क्या, जिस द पर्सन द चाइल्ड फ्रॉम द यूएस, उसके लिए कोई है ही नहीं ना, लाइक बेसिकली आई डोंट नो इज दैट कि यूएस में शायद लोग या बच्चे उतने ज़्यादा खेलते नहीं या दे डोंट रियली इंटरेक्ट विद देयर अदर चाइल्ड। बट जब मैं छोटा था ना डूड, आई डोंट नो जस्ट लाइक दैट कि शायद मेरे साथ ही हुआ कि हर लोगों के साथ हुआ, आई डोंट नो। बट जब मैं छोटा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर से बाहर था। मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं स्कूल में था, नो। इट जस्ट लाइक स्कूल में तो अलग ही रौब था, अलग स्कूल में तो आई वॉज लाइक लाइक जस्ट लाइक लाइक दोस्तों के साथ लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग क्योंकि बहुत साल हो गए जस्ट लाइक दैट, बट हाँ लाइक व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई वाज डूइंग काइंड ऑफ लाइक सो मच स्टूपिड स्टफ। ओके, अभी स्कूल से घर आने के बाद भी आसपास के बच्चे तो थे ही ना, कि यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे बच्चा है, तो आई एम एक्चुअली प्लेइंग विद दैट एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम प्लेइंग। ओके, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ओके, उनके पीछे दौड़ रहा हूँ, वो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, हम वी आर एक्चुअली प्लेइंग जस्ट राइडिंग अ बाइसिकल एंड दिस एंड दैट। सो it's just like that ना कि during the childhood I didn't really have kind of like a something really my own space, क्योंकि वो ऑप्शन था ही नहीं ना डूड। ओके, तो आई डोंट रियली थिंक अबाउट दैट स्टफ कि हाँ सांता क्लॉज एंड टूथ फेरी एंड मॉन्स्टर ना, जस्ट लाइक दैट ना, आई एम जस्ट enjoy, I don't know why what exactly enjoy in that particular age, but I was just like running, laughing, I don't know, I just kind of what I'm doing. Okay, so usually I don't really think about that fantasy and stuff like that. So might be I am not really thinking like शायद मैं नहीं सोच रहा था कि आई डोंट नो, लाइक बेसिकली इंडिया में तो शायद ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड गेट दैट मच अमाउंट, दैट अमाउंट लाइक दैट काइंड ऑफ लाइक चाइल्डहुड दैट वी गेट इन इंडिया। यूएस में शायद थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए दोज आर द रिकमेंडेड आंसर आर काइंड ऑफ लाइक अ सांता क्लॉज एंड टूथ फेरी एंड थिंग्स लाइक दैट। या नेक्स्ट क्वेश्चन,